इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का जो जनरल फॉर्म होगा वो इस टाइप से होगा, dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। लीनियर ODE of फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये वेयर P and Q are function of x। इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्यू माइनस पी वाई। इसी को हम लिख सकते हैं dy इक्वल्स टू क्यू माइनस पी वाई डी एक्स। इसी को हम लिख सकते हैं क्यू माइनस पी वाई डी एक्स प्लस माइनस डी वाई इक्वल्स टू 0। डी वाई को मैंने राइट हैंड साइड में ले लिया, माइनस डी वाई हो गया। अब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एग्जैक्टनेस, तो अगर ये एग्जैक्ट होगा तो हमारे पास एक रूल है, इसे इंटीग्रेट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए चेक कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम तो क्या हो गया मेरा क्यू माइनस पी वाई एंड एन माइनस 1 डेल एन ओवर डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल्स टू माइनस पी डेल एन ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू नॉट इक्वल, hence this is not exact. Now need to find integrating factor. So यहाँ पे मैं रूल 4th and 5th में से किसी एक को लगाऊंगा। डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स अपॉन एन इक्वल्स टू माइनस पी माइनस 0 अपॉन एन की वैल्यू -1, दैट इज पी। पी क्या है यहाँ पे, पी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। सो पी, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई टू द पावर पी डी एक्स बाई रूल। सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन इसको ले ले, इसी को ले लेते हैं इक्वेशन 2 multiplying to by integrating factor. So q minus py e to the power p dx p dx dy equals to 0. Now this become exact. We can check फॉर 3 के लिए m इक्वल्स टू q माइनस पी वाई ई टू द पावर पी डी एक्स एंड n इक्वल्स टू ई टू द पावर पी डी एक्स। इंटीग्रेशन है डेल एम ओवर डेल वाई, q तो 0 हो जाएगा, माइनस पी ई टू द पावर पी डी एक्स एंड डेल एन ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा, पूरे का पार्शियल डिफरेंशिएशन दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये p ई टू द पावर पी डी एक्स यानी एग्जैक्ट है। नाउ वी कैन अप्लाई द फार्मूला। सो इंटीग्रेटिंग q माइनस p इंटू वाई e raised to p dx
into dx minus e raised to p dx dy equals to some constant c here, keeping y constant, okay, and term not containing x, ओके y को कांस्टेंट रखते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे x को अगर टर्म x के टर्म आते हैं तो उसे 0 रखते हैं, ठीक है, टर्म नॉट कंटेनिंग x. नाउ q e raised to p dx into dx minus py e raised to p dx minus e raised to integrate p dx dy equals to c. Now we can write q p dx minus integrate, we can write this to e to the power p integrate dx plus e raised to integrate p dx dy equals to c. q e to the power p dx minus, we can write this d e to the power y into e to the power integrate p dx equals to c. Now we take this in right hand side and integrate y e to the power p dx equals to q e to the power p dx plus some constant c1. This is the general solution of linear ODE of first order. नोट लगा लेते हैं, कुछ नोट क्वेश्चन से पहले कुछ नोट. Here if q equals to 0 in equation 1, इक्वेशन क्या 1 क्या है हमारा, जो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन था dy over dx plus py equals to q. Then we say equation 1 is homogeneous ODE of first order. Okay. Second, if not, then we say equation 1 is non-homogeneous ODE of first order. Example, y dash minus y equals to e to the power 2x. What is the solution of this equation? Now solution, we need to find out first its integrating factor. Is integrating factor e to the power p dx e to the power, here p equals to minus 1, this coefficient of y, minus 1 into dx, that is e to the power minus x. Now its solution will be general solution of 1 is y
into integrating factor equals to q into integrating factor dx plus c, any constant y, here e to the power x, q यहाँ पे मेरा e to the power 2x है, into integrating factor minus e to the power minus x dx plus c. Now y e to the power minus x equals to, this become e to the power x dx plus c, that is y equals to e to the power plus c into e to the power x. e to the power x से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस c इंटू e to the power x. This is the required solution. Another example, y dash plus y tan x equals to sin 2x, and initial condition we given है, that is initial value problem है. Its solution, first we need to find integrating factor of this equation e to the power p dx, that is here p is tan x dx, okay, e to the power tan x, integration of tan x is log sec x, that is sec x. Okay, now solution is y into integrating factor, integrate q into integrating factor dx plus c. Here y sec x इक्वल्स टू, q क्या है मेरा sin 2x है, मेरा sec x हो गया प्लस c, y sec x tan 2x 2 sin x cos x sec x dx plus c, 2 कॉमन, cos x sec x cancel out, sin x dx प्लस c, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, that is y equals to minus 2 cos x plus c upon sec x minus 2 cos square x plus c cos x y. Now imposing initial condition, that is 1, y 0 equals to 1, that means x equals to 0 रखने पे 1 आ रहा है, तो y की वैल्यू 1 कब, जब मैं x की जगह 0 रख रहा हूँ, cos 0 की वैल्यू 1, c equals to 3, therefore y equals to minus 2 cos square x plus 3 cos x. This is final solution, that is required solution, a particular solution. Here this is जनरल सॉल्यूशन. तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर गिवन हो dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्मेट में, सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे डायरेक्ट. तो ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं.
now Bernoulli equation. Yeah, this is reducible to linear ODE of first order. Here अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में गिवन हो, ठीक, तो हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। सबसे पहले क्या करते हैं, हम y टू द पावर n से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज और q। now put 1 upon n minus 1 equals to some new variable z, differentiating with respect to x, so d over dx yn dz over dx, its derivative will be minus n plus 1 minus 1 dz over dx, and dy over dx, because y is depending on x, 1 upon y to the power dy over dx equals to 1 minus n dz over dx. 2 and 3. Now using 2 and 3 in 1 not 1, एक asterisk ले लेते इसे, so now using 2 and 3 in asterisk, so it become dz over dx plus pz equals to q, so dz over dx plus minus n pz equals to q into 1 minus n dz over dx plus okay. Now we can easily find the integrating factor, and we have solution of this type of differential equation. Now for the solution, integrating factor, and we need a formula here, and the differential equation is in z variable, so we have solution in obviously z equals to something, okay. We have integrating factor. Now if we have integrating factor, suppose if, say if, so we have the solution, general solution z into integrating factor to q 1 minus n, here total is q into integrating factor
dx plus c. I have one example which is given by logistic equation. Y dash equals to ay minus by square. Now we need to reduce this differential equation to first order linear differential equation. So first step is y dash minus a upon y equals to minus b. Now put 1 upon y equals to z. So minus 1 upon y square dy over dx equals to dz over dx. So now using this value in equation 2, using 3 in 2 both, so we can find dx az equals to minus b. Now dz upon dx plus az equals to b. So where a and b are constant, here a and b are constants. So integrating factor equals to e to the power a dx, that is e to the power ax. So solution is z e to the power ax equals to e to the power ax into b dx plus c. So z e to the power ax equals to b upon a e to the power ax plus c. Z equals to b upon a e to the power ax minus ax, that is, we can leave this term, that is 1 plus c e to the power minus x. But we need to put the value of z equals to 1 by y, so 1 by y equals to b upon a plus c e to the power minus ax. Y equals to 1 upon b by a plus c e to the power minus x. This is the solution of logistic equation.